Hello friends, myself Mr. Anupam Kumar Jha, and I am going to teach you regarding the chapter motion, and course is CBSE course, and subject offered physics, and class is 9. So here we go. I am going to discuss about the chapter motion. What is motion? Someone is, if generally we say that what is motion, then all of us say that we are traveling from one place to another place, or someone is jumping at the same place. And besides it, you can say that suppose you take a ball and you throw the ball. Suppose you move your hand like this, sidewise, lateral movement. All these are generally known as motion. But this is a general definition of motion. यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि ये मोशन का जनरल डेफिनेशन हो गया, मतलब खेलना, कूदना, चलना, फिरना, ये सब जो हो गए, ये सारे चीज़ दोस्तों मोशन का डेफिनेशन होता है. लेकिन मोशन का डेफिनेशन अगर फिजिक्स वाइज लें, यानी फिजिक्स के हिसाब से अगर मुझे लेना हो तो सबसे पहले मुझे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिखाना होगा. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब, मान लीजिए कि आप रोड के साइड में खड़े हैं, और रोड के साइड में खड़े होने पर यहाँ एक पेड़ है और पेड़ के बगल में ऐसे एक रोड है. तो ये एक पेड़ और इस रोड पे एक कार खड़ी है, ठीक है, और वो क्या है, इस समय स्थिर खड़ी है. दैट मीन्स द कार इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो क्या किया जाता है, जब भी मोशन को डिफाइन किया जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में किया जाता है. जैसे यहाँ पर अगर हम मोशन ऑफ कार को डिफाइन करेंगे तो बगल में क्या है, मान लीजिए देयर इज ए ट्री बाय द साइड ऑफ द रोड. रोड के बगल में एक पेड़ है और उसके बगल में कार खड़ी है. तो हम लोग क्या कहेंगे, द कार इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्री. Tree is the stationary object. So you have to compare with some stationary object that is fixed. That means tree is fixed and car can be at rest or can be in the moving position. So if the definition of the motion is said correctly, so we can define it in one line, that is, an object is said to be in motion or in the state of rest if object is in the position of rest with respect to some stationary object. And if suppose you take an example of a fixed tree is in standby mode, so we will say that car crosses that pole, tree, whatever you are going to say, you have to take a stationary object, रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेंगे उसको. और अगर कार उसके बगल में खड़ी है तो कहेंगे कि कार जो है तो मूव स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्थिर है. और कार अगर उस पेड़ को पार करके जाती है, इफ़ द कार क्रॉसेस दैट ट्री एंड गो ऑनवर्ड, आगे चली जाती है, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में है. यानी एनी बॉडी इज़ इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन वी से दैट इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. और generally we divide motion into two types, uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक आता है आपको टॉपिक जिसको बोलते हैं टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल का मतलब, जैसे सपोज यू आर स्टैंडिंग नियर द पॉइंट ए एंड नाउ यू arrive at point B
within 1 second, and the distance between A and B is 12 meter, that is 12 meter per second. It means you cover 12 meter in 1 second. So the time interval is 1 second and distance covered is 12 meter. Okay. So we can define uniform motion. So before we going to define it, we say that if this object again covered 12 meter in next second, so again it cover from B to C, from C to D, D to E, etc. In this case, it covers 12 meter, 12 meter, 12 meter, 12 meter, and so on. And the time interval is 1 second. That means in every 1 second, that object is going to travel 12 meter. So what we here see that? We see that object is covering 12 meter in 1 second. Yani every 12 meter in every 1 second. So we can say that the body is in the state of uniform motion because it covers equal distances in equal interval of time. Similarly, you can see an example of hands of a clock. What do you see? Hands of a clock covers equal distance in equal interval of time. कैसे देखेंगे? तो देखेंगे कि 1 सेकंड से अगले सेकंड में वो जितना कवर करता है उतना ही 2 सेकंड से तीसरे सेकंड में भी कवर करता है. तो when hands of a clock repeat its motion, so the time interval is same and the distance covered is also same. But whether I have to define uniform motion or non-uniform motion, we have to decide. So in case of non-uniform motion, we say that if a body covers unequal distance in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब समय का गैपिंग जो होगा वो 1 सेकेंड ही होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा? सपोज ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, है ना, या रूफ, एक छत से गिराया जाता है एक बॉल को. पहले सेकंड में वो 10 मीटर, दूसरे सेकंड में इन नेक्स्ट सेकंड इट कवर्स, है ना, क्या कहेंगे, 10 मीटर. बट इन नेक्स्ट सेकंड इट कवर्स 50 मीटर एंड इन द नेक्स्ट सेकंड, दैट मीन्स in the 4th second it covers 110 meter. That means time interval is same, but the distance traveled by the ball is different. That means ball is covering unequal distance in equal interval of time. So we say that if we have to define non-uniform motion say that how small these intervals may be. टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का हो, 5 सेकंड से घटकर 3 सेकंड का ही हो, लेकिन क्या हो कि डिस्टेंस कवर्ड मस्ट बी अनइक्वल. डिस्टेंस अलग अलग हो. पहले सेकंड में 10 मीटर, अगर दूसरे सेकंड में 25 मीटर, तीसरे सेकंड में क्या होगा 75 मीटर, उसके बाद नेक्स्ट ऑन गोइंग सेकंड में 125 मीटर. So distance traveled is different, but the time interval is same. This is the case of non-uniform motion. And similarly, one thing which I am going to discuss, that is speed, velocity. Actually, when we have to say to solve any numerical and a term speed is used, speed is considered their velocity. Speed is a vector quantity or scalar. First of all, I have to know what is vector quantity and what is scalar quantity. A scalar quantity is a quantity, or you can say that it is a physical quantity whose direction is not specified. Direction नहीं दिया होता है, but magnitude is given. Suppose somebody says that car is going at the rate of 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर जाता है. तो कार का स्पीड तो दिया हुआ है,
that means magnitude is given, but in which direction, है ना, your car is moving, किस दिशा में तुम्हारी कार घूम रही है, ये नहीं दिया हुआ है. सो डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है. तो वी से दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर व्हेन मैग्नीट्यूड इज नोन बट डायरेक्शन इज नॉट नोन. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हम क्या कर सकते हैं, इफ़ ए क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी then it has magnitude and direction both. Suppose we say that a car, है ना, whose velocity is 16 मीटर पर सेकेंड in east direction, यानी इस डायरेक्शन में वो जा रहा है और वेलोसिटी क्या है 16 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स magnitude and direction both have been mentioned here. So we say that this is the case of vector quantity. This is it, sir, and I am going to discuss the next thing in another class, and all the candidates are requested to subscribe my channel. and आप लोग सभी मेरा ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं ऑफलाइन क्लास भी चलाता हूँ अनुपम क्लासेस के नाम से. पांडे पुल के नज़दीक में NP हॉस्टल है जहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ. तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी सारे डिटेल्स ऑफलाइन क्लासेस के सारे हमारे फ्लैक्स पर दिए हुए हैं, और मेरा नंबर 6201977123 पर आप संपर्क कर सकते हैं. और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.